Namaste Dostan. Welcome, friends, to a culinary adventure where we'll unlock the secrets of ordering food in English at a restaurant. Have you ever felt a little lost or unsure when faced with an English menu? Or perhaps you've wanted to impress your friends or colleagues with your sophisticated ordering skills? Well, you've come to the right place. Today, we're embarking on a journey to transform you from a hesitant diner into a confident connoisseur. Main Hoon Kapil Sharma, your friendly guide to navigating the world of restaurant English. I've been in your shoes, feeling a bit overwhelmed by unfamiliar terms and the pressure to order correctly. But don't worry, I'm here to share my tips and tricks to make the experience smooth, enjoyable, and even a little bit fun. We'll explore common phrases, understand menu layouts, and even learn how to handle special requests with grace and confidence. Our age Hum Sikhenj restaurant main English mine ordered Kaiser Karin, and today, we're going to learn exactly how to order in English at a restaurant. We'll break down the entire process, from the moment you walk in the door to the satisfying conclusion of paying your bill. We'll cover everything from greeting the staff and asking for a table to understanding the menu descriptions and making your selections. We'll even delve into the art of politely requesting modifications to your dishes and handling any unexpected situations that might arise. Bahut log Gabra Jate Hain. I know that many people get nervous when it comes to ordering in English. The pressure of speaking a foreign language, combined with the unfamiliarity of the menu and the presence of attentive waiters, can be quite intimidating. It's perfectly normal to feel a little anxious, especially if you're not a native English speaker. But remember, everyone starts somewhere, and with a little practice and guidance, you can overcome your fears and order with confidence. Lekin chinta mat karo, main hoon na aapki madad ke liye. But don't worry, I'm here to help you every step of the way. I'll provide you with the essential vocabulary, useful phrases, and practical tips you need to navigate any restaurant situation with ease. Think of me as your personal culinary translator, bridging the gap between your native language and the delicious world of English-speaking restaurants. We'll work together to build your confidence and empower you to order exactly what you want, without hesitation or fear. Hum ek imaginary restaurant mein Raju or Chintu ki madad se sikhenj. We'll learn through the adventures of Raju and Chintu in an imaginary restaurant. These two friends will encounter various scenarios, from choosing appetizers to splitting the bill, providing you with real-life examples of how to use English in a restaurant setting. By following their journey, you'll gain a practical understanding of the language and etiquette involved in ordering food in English. Step by step, drinks se lekar bil tak. Step by step, from drinks to the bill, we'll cover every aspect of the dining experience. We'll start with the basics, such as greeting the waiter and asking for a table. Then we'll move on to understanding the menu, ordering appetizers, main courses, and desserts, and requesting drinks. Finally, we'll tackle the often tricky task of paying the bill, splitting the cost with friends, and leaving a tip. Thodi mazak, thoda learning. Let's make it fun, a little learning. Let's make this an enjoyable experience. Learning a new language shouldn't be a chore. That's why we'll incorporate humor, engaging scenarios, and interactive exercises to keep you motivated and entertained. We'll laugh at our mistakes, celebrate our successes, and create a positive learning environment where you feel comfortable taking risks and experimenting with your English skills. Chali, shuru, karte hain ye mazdar safar. So let's begin this exciting journey together. Get ready to expand your culinary vocabulary, boost your confidence, and unlock a world of delicious possibilities. By the end of this lesson, you'll be equipped with the skills and knowledge you need to order food in English at any restaurant, anywhere in the world. So grab your metaphorical fork and knife, and let's dive in. Entering a restaurant can sometimes feel a bit daunting, especially if it's a new place or you're not quite sure about the etiquette. But don't worry, it's usually a very straightforward and pleasant experience. The first step, of course, is simply walking through the door. As you approach the entrance, take a moment to observe the atmosphere. Is it bustling and lively or more relaxed and intimate? This can give you a clue about the type of dining experience you're about to have. Smiling. Namaste, sir. Welcome. A friendly face is usually the first thing you'll see. The host or hostess is there to greet you and manage the seating arrangements. They're the gatekeepers of the dining room, ensuring that everyone is accommodated comfortably. Their job is to make you feel welcome from the moment you step inside. A warm greeting can instantly put you at ease and set a positive tone for your meal.
Raju. Yes, I need a table for one, please. When you approach the host, be clear about your needs. Are you dining alone or are you with a group? Do you have any preferences for seating, such as a window seat or a quiet corner? Communicating your requirements clearly will help the host find the perfect table for you. Don't be afraid to ask questions or express your preferences. The host is there to assist you and ensure that you have a comfortable and enjoyable dining experience. Chintu. Certainly, sir. Please come with me. Will this table be all right? Once the host has found a suitable table, they will usually lead you to it. Follow them attentively and take note of your surroundings. The ambiance of the restaurant can contribute significantly to your overall dining experience. As you approach the table, the host will often ask if it meets your approval. Take a moment to assess the location and the view. If you have any concerns, don't hesitate to express them politely. Raju. Yes, thank you. Once you're satisfied with the table, simply nod your approval and allow the host to seat you. They may pull out the chair for you or offer assistance in getting settled. Take a moment to arrange your belongings and make yourself comfortable. This is your space for the duration of your meal, so feel free to personalize it to your liking. Chintu. Here is your menu, sir. When you are ready to order, please let me know. After you're seated, the server will typically present you with a menu. This is your guide to the culinary offerings of the restaurant. Take your time to browse through the options and familiarize yourself with the various dishes. The server will usually check back with you shortly to see if you have any questions or if you're ready to place your order. Raju. Okay, I'll take a look. Don't feel rushed to make a decision. Take your time to peruse the menu and consider your options. If you're unsure about anything, don't hesitate to ask the server for recommendations or clarification. They are there to assist you in making the best choice for your palate. Dekha kitna simple da, bas please, or thank you ka istemal kijiye. Politeness matters. Remember, a little politeness goes a long way. Using simple phrases like please and thank you can make a big difference in your interactions with the restaurant staff. Treat them with respect and courtesy, and they will be more than happy to assist you in any way they can. Good manners are always appreciated, and they can enhance your overall dining experience. Raju, to himself, Bapri, itne sare options. But I'll manage. Narrator. Faced with a plethora of choices, it's easy to feel overwhelmed, but don't worry, you've got this. Take a deep breath, focus on your preferences, and trust your instincts. You can always ask the server for guidance if you're feeling lost. Remember, the goal is to enjoy your meal and have a pleasant dining experience. So relax, explore the options, and choose something that appeals to you. Drinks, order Karna Simple High. Just say, I'd like and add your choice. Don't forget to ask for water if you need it. Raju smiling. This was easier than I thought. Common drink words, Yad Rakhna, water, juice, soda, tea, coffee, bas ho gaya. Starters ordered karte waqt. What do you recommend? Yeah, is it spicy? पूछना ना भूलें. Main course choose करते हुए क्यों recommendations मांगना बेस्ट है. वेटर की एडवाइस का फायदा उठाइए. अगर आपकी कोई डाइटरी नीड है, वेजिटेरियन, वीगन, ग्लूटेन फ्री, जरूर पूछिए. हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं. योर फूड विल बी रेडी सून सर. सर्विस यहाँ A1 है. क्लियर कम्युनिकेशन से हाई बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है. खाने के बीच में कुछ और चाहिए हो तो एक्सक्यूज मी बोलकर पोलाइटली मांग लीजिए. प्लीज और थैंक यू से इंप्रेशन बनता है. राजू थिंकिंग, पहले कितना डरता था, अब तो आसान लगता है. पोलाइटनेस हर जगह काम आती है. बिल मांगने के लिए कैन आई हैव द बिल प्लीज या चेक प्लीज बोल सकते हैं. सर्विस अच्छी लगे तो टिप देना ना भूलें. अप्रिशिएट गुड सर्विस, जैसे आप शो को तालियां देते हैं. देखा, रेस्टोरेंट में इंग्लिश में ऑर्डर करना कितना आसान है. अब आप भी किसी भी रेस्टोरेंट में कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में ऑर्डर कर सकते हैं. याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. तो अगली बार जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए तो इंग्लिश में ऑर्डर करने से मत हिचकिचाइए. एपी कर सकते हैं. इस वीडियो में हमने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि कैसे आप रेस्टोरेंट में इंग्लिश में ऑर्डर कर सकते हैं. फ्रॉम बुकिंग अ टेबल टू पेइंग द बिल. हमने आपको पोलाइट फ्रेजेस भी सिखाए हैं जो आपको रेस्टोरेंट स्टाफ के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करेंगे. तो देर किस बात की, आज ही प्रैक्टिस करना शुरू करें और देखिए कि आप कितनी जल्दी इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाते हैं. प्रैक्टिस करते रहिए. जितना बोलेंगे उतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे. कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से ही आती है. अगर आप शुरू में थोड़ा नर्वस फील करते हैं तो कोई बात नहीं. सभी शुरू में ऐसा ही फील करते हैं. लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो
आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एपी अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा, और जितना आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा उतना ही आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और कभी भी हार मत मानिए। हमने टेबल बुक करना, फोन पर कैसे बात करनी है और क्या कहना है, यह सब सीखा। टेबल बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप किसी पॉपुलर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। अगर आप टेबल बुक नहीं करेंगे तो आपको वेट करना पड़ सकता है, या फिर आपको टेबल नहीं भी मिल सकता है। टेबल बुक करने के लिए आप रेस्टोरेंट को फोन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। जब आप टेबल बुक कर रहे हैं तो आपको अपना नाम, फोन नंबर और कितने लोगों के लिए टेबल चाहिए यह बताना होगा। आपको यह भी बताना होगा कि आप किस टाइम पर आना चाहते हैं। रेस्टोरेंट आपको कॉन्फर्मेशन देगा कि आपकी टेबल बुक हो गई है। ऑर्डर देना, मेनू को समझना और अपनी पसंद का खाना चूज करना भी सीखा। ऑर्डर देते वेकुटी आपको वेटर को बताना होगा कि आप क्या खाना चाहते हैं। आप ही मेनू में से कोई भी डिश चूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी डिश के बारे में नहीं पता है तो आप वेटर से पूछ सकते हैं। वेटर आपको डिश के बारे में बता देगा और आपको यह भी बता देगा कि डिश में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। एपी वेटर से यह भी पूछ सकते हैं कि डिश कितनी स्पाइसी है। जब आप ऑर्डर दे रहे हैं तो आपको पोलाइट रहना चाहिए। आपको वेटर को प्लीज और थैंक यू कहना चाहिए। स्पेशल रिक्वेस्ट्स जैसे कि एलर्जी इंफॉर्मेशन देना या फिर कोई डिश मॉडिफाई करवाना भी सीखा। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो आपको वेटर को बताना होगा। वेटर आपको बता देगा कि डिश में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और आपको यह भी बता देगा कि डिश में कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं हैं जिनसे आपको एलर्जी है। अगर आप किसी डिश को मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो आप वेटर को बता सकते हैं। वेटर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। और बिल पे करना सब सीख लिया। बिल पे करते वेकुटी आपको वेटर को अपना बिल देना होगा। वेटर आपको बिल दे देगा और आपको बिल चेक करना होगा। अगर बिल में कोई गलती है तो आप वेटर को बता सकते हैं। वेटर गलती को सुधार देगा। एपी बिल कैश, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। जब आप बिल पे कर रहे हैं तो आपको वेटर को टिप देना चाहिए। टिप यूजुअली बिल का 10 to 15% होता है। पोलाइट फ्रेजेस प्लीज हमेशा याद रखें। प्लीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका यूज आप किसी से कुछ मांगने के लिए कर सकते हैं। थैंक यू कहना ना भूलें। थैंक यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका यूज आप किसी को धन्यवाद देने के लिए कर सकते हैं। एक्सक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आप किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कर सकते हैं या फिर किसी से माफी मांगने के लिए कर सकते हैं। इन पोलाइट फ्रेजेस का यूज करके आप रेस्टोरेंट में एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपका एक लाइक ह्यूमन बहुत मोटिवेट करता है और ह्यूमन पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, जिससे वो भी इंग्लिश सीख सकें और रेस्टोरेंट में कॉन्फिडेंटली ऑर्डर कर सकें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहेगा और आप कभी भी कोई इंपॉर्टेंट लेसन मिस नहीं करेंगे। कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे क्या सीखना चाहते हैं। हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। अगले एपिसोड तक हंसते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए, क्योंकि सीखना तो कभी बैंड नहीं होना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें और अपने आप को इंप्रूव करते रहें। और रेस्टोरेंट जाकर प्रैक्टिस जरूर करना। बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो अगली बार जब आप रेस्टोरेंट जाएं तो इंग्लिश में ऑर्डर खाने से मत हिचकिचाइए। आप ही कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।